A very good morning to all my dear students. Today we are going to study a new chapter, that is direct and indirect speech in English grammar. In this chapter we are going to discuss about what direct and indirect speeches are. Then we will discuss about the rules and how do we convert a direct speech into an indirect speech. So this is all we are going to discuss, and after that we are going to discuss the exercises given in the chapter. Okay, so let's start with the chapter. In direct and indirect speech, there are two ways of reporting what somebody says. The first is direct speech, and the second is indirect or reported speech. A speaker's word can be reported in two ways. That is direct speech. What is the meaning of direct speech? The exact words of a speaker. For example, the teacher said to Rajesh, "You have a bright future." यहाँ पे क्या है कि जो स्पीकर है उसके जो शब्द हैं, उसकी जो बोल है, ठीक है, वो दो तरीके से रिपोर्ट की जा सकती है. एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट का मीनिंग होता है कि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसे कि ये एग्जाम्पल पढ़िए. टीचर ने राजेश से कहा, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है. तुम्हारा फ्यूचर कैसा है? उज्जवल भविष्य है. ठीक है. अनदर इज डायरेक्ट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच? Indirect speech is what the speaker has said without using the exact words. In simple terms, indirect speech is to pass on the message of the speaker but not using the exact words. Let us see the same example. The teacher told Rajesh that he had a bright future. Can you see the difference? एक जगह पे टीचर डायरेक्टली राजेश से बोल रही है, दूसरी जगह पे हम टीचर के वर्ड्स को बता रहे हैं कि टीचर ने राजेश से क्या बोला. तो टीचर ने राजेश से बोला कि, तो जो आप की लगाते हैं हिंदी में, यहाँ पे हमने यूज़ किया है दैट. ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन वी यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन अवर राइटिंग. द एग्जैक्ट वर्ड्स spoken must be put inside speech marks, also known as double inverted commas. हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को रखते हैं व्हेन वी आर यूजिंग डायरेक्ट स्पीच इन आवर राइटिंग. ओके. दूसरा पॉइंट है, द फर्स्ट स्पोकन वर्ड मस्ट हैव अ कैपिटल लेटर. जब आप इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो आप स्टेटमेंट लिखोगे स्पीकर का, उसका फर्स्ट लेटर जो होगा, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, वो कैसा होगा? कैपिटल होगा. व्हेन अ न्यू स्पीकर बिगिन्स वी मस्ट स्टार्ट अ न्यू लाइन. जब नया स्पीकर बोलता है तो हमको न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू में नहीं लिखना है. ओके. डायरेक्ट स्पीच. इन डायरेक्ट स्पीच वी यूज़ द स्पीकर्स ओन वर्ड्स. इन द टेक्स्ट we put speech marks, that is double inverted commas, around the words spoken. See, the example is given, double inverted commas, and then speech ka S is capital. Speech marks are also called inverted commas. Okay, let us see few examples. But before we start with examples, I want you to write the definition which is given on page number 129 of your textbook in your notebook. आपको जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 129 पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन लिखी है विथ रेड इंक, वो आपको अपने नोटबुक में कॉपी करनी है. ऑल्सो जो आपको ब्लू बॉक्स दिया हुआ है ऑन सेम पेज नंबर 129, you can see that there are two blue boxes given. These are the important points which you have to write in your notebook. Okay, so let us start with the example. The first example is, he said, I am playing. This is, we are talking about somebody who is talking directly. So the speaker is he. And what he says, he said, comma, double inverted commas begin,
First letter of I will be capital. I am playing, full stop. Now full stop will always come under double inverted commas. See, there are so many examples given in direct speech. I have caught 3 fish. The train will leave in 10 minutes. I know this type of angle. I love ice cream. I am a clever girl. So these are the speakers, they are talking about something or the other, and the words, the statements which are written in the cloud box are the direct words of the speaker. Let us now understand about the indirect speech. An indirect speech or reported speech reports what a speaker said without using the exact words of the speaker. When we report what another person has said, we usually do not use the speaker's exact words, but we talk about what he or she has said in an indirect manner. Therefore, you need to learn how to transform direct speech into a reported speech or indirect speech. इसका मतलब ये है कि जब हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को किसी और को बता रहे होते हैं तो हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ना यूज़ करके इनडायरेक्ट वे में उसने क्या कहा वो बोलते हैं. एक तरीके से हम स्पीकर के मैसेज को पास ऑन करते हैं. ठीक है, और इसलिए ही आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तभी आप रिपोर्टेड स्पीच समझ पाएंगे. अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? इन रिपोर्टिंग स्पीच द टेंस यूजुअली चेंजेस. दिस इज़ बिकॉज व्हेन वी यूज़ रिपोर्टेड स्पीच वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट अ टाइम इन द पास्ट. यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है वो जनरली चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्टली बोल रहे होते हैं, हम कोई टाइम पास्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, मतलब कि वो बीत गया है, इसलिए हम उसे हमेशा पास्ट में ही बात करते हैं. इसलिए क्या होता है, टेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट वाज सेड. हम इनडायरेक्ट स्पीच में ये बताते हैं कि क्या बोला गया. वी समटाइम्स नीड टू चेंज प्रोनाउंस. हमको कभी कभी प्रोनाउंस भी चेंज करने पड़ते हैं. वी डोंट यूज़ स्पीच मार्क्स. और हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स लिखते समय डबल इन्वर्टेड कॉमास या स्पीच मार्क्स का उपयोग नहीं करते हैं. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल दैट वी सॉ इन डायरेक्ट स्पीच फर्स्ट. ही सेड आई एम प्लेइंग. दैट वॉज आवर डायरेक्ट स्पीच. अब जब हम इसी चीज़ को इनडायरेक्टली प्रेजेंट करेंगे तो वी विल से ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग. तो क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा को अलग करके हमने दैट यूज़ किया और आई की जगह पे हमने ही यूज़ किया, बिकॉज हम ही के बारे में ही बोल रहे हैं. और एम का क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म, दैट इज़ वॉज. सो ही वॉज प्लेइंग. ओके, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स विच वेर given by 5 different speakers. He said he would caught 3 fish. He said he had caught 3 fish. He shouted that he shouted that the train would leave in 10 minutes. She said she was a clever girl. He said he loved ice cream. She said that she knew that type of angle. What changes did you notice? The changes that I noticed were there was an omission of comma. We use that. There was a change in pronoun. There was a change of tense. And also there was a change of adverb, place or time. Let's understand one more example for both direct and indirect speech. See, in the first image, the person is not feeling well, so he is saying, I am feeling ill. Okay? The another person in the second picture is reporting what Paul is saying. So he says, Paul said that he was feeling ill.
जो पॉल है फर्स्ट पर्सन में, देखो फर्स्ट पिक्चर में विद द वाइट शर्ट, द पर्सन इन वाइट शर्ट, उसका नाम पॉल है। वो क्या, वो बोलता है कि मुझे बीमार सा फील हो रहा है। जो ब्लैक कोट में पर्सन है वो क्या बोल रहा है कि पॉल बोल रहा है कि उसको बीमार सा फील हो रहा है, ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। ओके, इन दिस एग्जाम्पल इन डायरेक्ट स्टेटमेंट वी यूज्ड comma after writing Paul said, comma, double inverted commas started, I is capital, am is there, and inverted comma is there at the end of the statement. Now in indirect statement, what we have done, when we converted, instead of using comma, we have used that. For I, we have changed it into he, am has become was, and the end inverted comma has become just a full stop and nothing else. What are the changes that we have seen in this example? No speech markers in the indirect speech were used. We added that pronoun changed from I to it become he. Tense also changed, from am it became was. In the next part of my video, we will understand the rules for changing a direct speech into an indirect speech. So this, I have ended my video 1. Okay, I am going to give you in parts and pieces, so it will be easy for you to understand, and then only jump to the exercises, because exercises is nothing but to practice what you have learned. Okay, so let's see you again in part 2.